हेलो एवरीवन, वेलकम टू धरतीस एकेडमी। आज के टॉपिक की शुरुआत करने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आवर टुडेस टॉपिक इज व्हाट पीपल डू। आज की वीडियो में हम पीपल का ऑक्यूपेशन सीखेंगे। यू कैन मेक नाउन्स दैट शो द वर्क दैट पीपल डू. The work that people do means their occupation by adding er, r or or to the verb or noun. Nouns या फिर verbs में पीछे हम er या फिर सिर्फ r या फिर or लगाकर people का occupation बना सकते. For example, a person who helps someone. Help करने वाला, तो उसमें हम er लगाएंगे तो बन जाएगा हेल्पर. हेल्प करने वाले को कहेंगे हेल्पर. अ पर्सन वू टेंड्स प्लांट्स इन अ गार्डन. तो गार्डन में प्लांट्स का ध्यान रखने वाला, तो उसमें गार्डन के पीछे er लगाएंगे तो उसका ऑक्यूपेशन बन जाएगा गार्डनर. अ पर्सन वू डांसेस. डांस करने वाला, that is dancer. A person who act करने वाला actor. Sometimes you have to repeat the last letter and then add er. A person who runs. run करने वाला, दौड़ने वाला, उसे कहेंगे runner. लेकिन as you can see यहाँ पर हमें last letter n जो है उसे repeat करना पड़ा है, runner. Okay, now write the occupation of a people by given hints. I direct movies. Director. I sail on the seas. Sailor. I make pots out of the clay. Potter. I write books for children. Writer. I paint pictures. Painter. I weave cloth out of cotton. Then weaver. I swim in sporting competition. Swimmer. I juggle objects to entertain people. Juggler. I cook food. It's cook. I make bakery items. Baker. So that's it for today's video. Thank you and stay tuned. Bye bye.